Everyone, welcome to Saurasya classes. This is the question from GATE 2026, question number 25. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम है। यहाँ पर एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का इक्वेशन दिया गया है, फंक्शन दिया गया है, तो फंक्शन में जो जो अननोन्स है उसका वैल्यू निकालना है। दिस इज जस्ट पुट द फंक्शन इन द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड यू विल फाइंड द आंसर। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। So given differential equation is A del 2f by del x square plus B del 2f by del y square equals to 8f x comma y, and the given function fxy is e to the power 2 xi x plus eta y. Okay, therefore del f by del x क्या होगा? Del f by del x होगा 2 xi e to the power 2 xi x plus eta y. That means 2 xi fxy. Okay, similarly del 2f by del x square क्या होगा? del 2 by del x square होगा 2 xi del f by del x, और del f by del x का वैल्यू क्या है? 2 xi into 2 xi fxy, which is nothing but, therefore f x x partial double derivative with respect to x is 4 xi square fxy. Okay, this is the one value. Now, similarly, we have to find del 2f by del y square. So, fy means del f by del y is del y of e to the power 2 xi x plus eta y, which is nothing but eta e to the power 2 xi x plus eta y. So, therefore, this is nothing but eta f xy. So, fyy क्या होगा? fyy होगा eta fy. ओके, सो fy का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे. सो eta f xy. So this is therefore fyy is nothing but eta square fxy. So just put this box's value in the given differential equation. This we get क्या मिलेगा हम लोग को? a f x, हम लोग पहले एक बार लिख लेते हैं. The differential equation is a f x x plus b f y y equals to 8 f xy. So value put kare. So a into 4 xi square f xy. This is from the here, and plus b eta square f xy. This is from here equals to 8 f xy. So हम लोग को क्या मिला? Therefore 4a xi square plus b eta square f x comma y is nothing but 8 f x comma y, and if x comma y है e to the power 2 xi x plus eta y, which cannot be negative. Okay, so the relation is true for non-zero. That means f x y हम लोग both sides अगर कैंसिल करेंगे, therefore हम लोग को रिलेशन आएगा 4a xi square plus beta eta square equals to 8. अब सिंपली इस इक्वेशन में एक एक ऑप्शन में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे क्या आएगा. सो हम लोग का रिलेशन हम लोग एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर. सो 4a xi square plus b eta square equals to 8. अगर जाय का वैल्यू 1/√a होगा तो एंड ईटा का वैल्यू 2/√b होगा, तो वैल्यू पुट करें 4a जाई स्क्वायर मींस 1/a प्लस b इंटू ईटा स्क्वायर मींस 4/b, तो कैंसिल होगा, तो हम लोग का वैल्यू आ रहा है 4 + 4 विच इज 8. सो दिस इज ट्रू. सो ऑप्शन ए इज ट्रू. ऑप्शन बी जाई इक्वल्स टू 0 मींस 4a into 0 plus b into 0 which gives 0 not equal to 8. So this is wrong. C 4a xi square means 1/√2a square means 2a plus
b into eta square means here this means 2b. So this gives a cancel 2 plus 1 by 2, which is not equals to 8. So this option is also wrong. And last option, 4a, xi square means 0. Okay, because here xi is 0. Plus b, eta means 2 into root over of 2 by b. So eta का square होगा 4 into 2 by b. b cancel होगा. So 0 plus of 8, which is gives 8. So this is also a solution. So option A and D are true. Okay, so option A and D are true. Thank you.